अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो आज हम मेन और सबॉर्डिनेट क्लॉज का जो डिफरेंस है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड आई हैव 20 सेंटेंसेस जिसमें से हम टुडे वी विल बी सॉल्विंग 40 सेंटेंसेस। जो फर्स्ट 20 सेंटेंसेस हैं उसमें से हम इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज। और जो फर्स्ट 20 सेंटेंसेस है उसमें से हम मेन क्लॉज को फाइंड आउट करेंगे, और जो सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें 20 सेंटेंसेस होंगे, उसमें से हम जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ये आपके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अदर दैन दैट भी मेन और सबॉर्डिनेट क्लॉज की जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत बहुत ज़रूरी होती है, बहुत क्रूशल होती है ओवरऑल भी ग्रामर को समझने के लिए। और इसमें आपकी ग्रामर जो आपका सेंटेंसेस के हवाले से आपके पास जो नॉलेज है वो आपका चेक भी होता है। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया जाए और उसमें से आपको कहा जाए कि इसमें से मेन क्लॉज बताएं या सबॉर्डिनेट क्लॉज बताएं, और अगर आप सही तरीके से बता लेते हैं सो दिस मीन्स कि आपकी जो ग्रामर है वो बेहतरीन है। दिस इज़ बेसिकली अ सर्टिफिकेट एज वेल, कि मतलब आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको क्विकली वी विल नॉट गो इनटू द टाइप्स और काइंड्स ऑफ मेन क्लॉज एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज। विल जस्ट गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेन एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। तो मेन क्लॉज क्या होती है? मेन क्लॉज इज बेसिकली टाइप ऑफ अ क्लॉज दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसके अंदर क्या होता है, इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। द मेन क्लॉज कन्वेज अ कंप्लीट सेंस वेयर एज द सबॉर्डिनेट क्लॉज डज नॉट। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेंटेंस। सो बेसिकली मेन क्लॉज जो है ना, ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। जब आप उस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा बना देते हैं तो वहाँ पे उसमें वो क्या बन जाती है, वो एक क्लॉज बन जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ मेन क्लॉज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन हु वॉज डांसिंग। आई सॉ अ मैन हु वॉज डांसिंग। अब इसमें आई सॉ अ मैन जो है दैट इज़ अ मेन क्लॉज, दैट इज़ अ मेन क्लॉज, और हु वॉज डांसिंग दैट इज़ अ सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो हु वॉज डांसिंग है इसमें भी तो वॉज डांसिंग में यानी वर्ब आया हुआ है, और हु जो है दैट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो इसमें भी है, तो हम इसको मेन क्लॉज क्यों नहीं कहते? तो बच्चों उसका जवाब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं ये वाला जो सेंटेंस है इसको मैं अगर यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सेंटेंस मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब आपके सामने मैं सिर्फ ये वाला सेंटेंस रखता हूँ, हु वॉज डांसिंग, हु वॉज डांसिंग। अब मैं 50 दफ़ा भी कहूँ हु वॉज डांसिंग, हु वॉज डांसिंग, तो आपको बात समझ नहीं आएगी। आप कहेंगे कि सर हु कौन डांस कर रहा था, मतलब उस बंदे का कोई नाम बताया हमें, लड़की थी, लड़का था, मतलब कौन था जो डांस कर रहा था। तो यही चीज़ होती है कि जो सबॉर्डिनेट क्लास होती है वो अपना मीनिंग मुकम्मल नहीं बता सकती, राइट, गेटिंग द पॉइंट। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, यानी कि जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और सिंपल मैं कहता हूँ आई सॉ अ मैन, तो दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। मैंने एक आदमी को देखा, ओके, वेल, गॉट इट, मुकम्मल सेंटेंस इससे मिल गई। तो ये डिफरेंस होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज में और मेन क्लॉज में। ज़रा चेक करने दें कि हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, अब ये आपको मेन क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट वी हैव दीज सेंटेंसेस, ठीक है, और हम इन सेंटेंसेस में क्या करेंगे, इसमें देयर आर 20 सेंटेंसेस, हम हर सेंटेंस में से जो मेन क्लॉज है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू डू इट विद मी, यू कैन गिव मी द आंसर्स इन लाइव चैट, और या फिर कमेंट्स में भी आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा सा मतलब स्लो इसको मैं सॉल्व करूँगा, ताकि मुझसे पहले आप इसको सॉल्व करके मुझे बता दें जब तक मैं आपको बताऊँ। तो पहला सेंटेंस है, दिस इज़ द केक दैट आई लाइक, दिस इज़ द केक दैट आई लाइक। अब इसमें क्या है, टू क्लॉजेज हैं, दिस इज़ द फर्स्ट क्लॉज, दिस इज़ द केक, एंड दिस दैट आई लाइक दैट इज़ द सेकंड क्लॉज। तो अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सी क्लॉज जो है वो इसमें मेन क्लॉज है, ठीक है। आप टाइप कर दें जो आपको लग रहा है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि दैट आई लाइक इज़ द मेन क्लॉज, तो आप कॉमेंट्स में दैट आई लाइक टाइप कर दें, और अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ द केक, ये वाली जो है ये मेन क्लॉज है, तो आप इसको टाइप कर दें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट दिस इज़ द केक, दैट इज़ द मेन क्लॉज, दिस इज़ द केक, राइट, ये केक है, ओके, बात मुकम्मल पूरी हो गई। दैट आई लाइक ये क्या है, ये इसके अंदर सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो मैं इसमें जो मेन क्लॉज है उसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि द रिमेनिंग क्लॉज इज़ बेसिकली अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको सेंटेंसेस क्लियर नज़र आएँ। लेट मी जूम इट टू अ लेंथ कि जिस पे आपको सेंटेंस क्लियर नज़र आए। ओके, द सेकेंड सेंटेंस इज व्हेन आई गो होम आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी, व्हेन आई गो होम आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी। तो अब इसमें कौन सी मेन क्लॉज है? व्हेन आई गो होम ये एक क्लॉज है, एंड आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी दैट इज़ द सेकेंड क्लॉज, एंड आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी दैट इज़ द मेन क्लॉज,
ठीक है, मैं हमेशा कॉफ़ी पीता हूँ। व्हेन आई गो, जब मैं घर जाता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ। अब मैं सिंपल कहता रहा हूँ कि जब मैं घर जाता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ। आप कहेंगे सर जब आप घर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स कि व्हेन आई गो होम जो है ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे रहा, लेकिन आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। सो दिस मीन्स कि आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी इज़ द मेन क्लॉज। उसके बाद आई ईट चिकन बिकॉज आई एम हंग्री। तो अब इसमें मेन क्लॉज, अब इसमें आई ईट चिकन इज़ द फर्स्ट क्लॉज एंड बिकॉज आई एम हंग्री दैट इज़ द सेकेंड क्लॉज। तो अब इसमें से मेन क्लॉज कौन सी है? Yes, very good. I eat chicken is the main clause. I eat chicken is the main clause. उसके बाद nobody knows who I am. Nobody knows who I am. अब इसमें nobody knows is the first clause and who I am this is the second clause. अब इसमें main clause कौन सी है? Yes, absolutely right. Nobody knows. Nobody knows is the main clause and who I am that is the subordinate clause. Okay, the gift that you gave me was good. The gift दैट यू गिव मी वॉज गुड। अब इसमें यहाँ पर देखें लाजमी नहीं है कि जो दोनों क्लॉजेज हैं वो अलग अलग सेपरेट हों। ऐसा भी हो सकता है कि मेन क्लॉज के अंदर कहीं पर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो उसके अंदर छुपी हुई हो, रैप हुई हो। जैसे दैट यू गिव मी, दैट यू गिव मी ये क्या है? ये इसके अंदर एक क्लॉज है और द गिफ्ट दैट यू द गिफ्ट वॉज गुड, ठीक है। द गिफ्ट वॉज गुड जो है ये क्या है? इसके अंदर दूसरी क्लॉज है। तो अब इसमें द गिफ्ट was good, the gift was good ये जो है that is the main clause, the gift was good। अब the gift that you give me, अब इसमें जो that you give me है that is the subordinate clause, ठीक है। the gift was good that is the main clause और इसमें that you give me is the subordinate clause, right? Getting the point? बात समझ आ रही है? This was the tricky one. Okay, Maria bought some flowers which she wanted to give her sister. Maria bought some flowers which she wanted to give her sister। अब इसमें Maria bought some flowers is the first clause और which she wanted to give her sister that is the second clause and Maria bought some flowers that is the main clause। Maria bought some flowers that is the main clause, absolutely right। Okay, moving to question number 7. The boys who misbehave in the class were punished। The boys who misbehave in the class were punished। अब basically the boys were punished। The boys were punished is first clause and who misbehave in the class that is the second clause। So the boys or were punished, the boys were punished that is the main clause or who misbehave in the class that is the subordinate clause। तो ये चीज़ आपने अब देखें जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था और क्वेश्चन नंबर 7 है ये मिलते जुलते हैं कि दोनों में क्या है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सेंटर में रैप होके आ रही है, ठीक है। अच्छा, come when you like, come when you like। अब इसमें पता चलेगा। ओके, आई विल वेट हु इज़ गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर मी। इसमें मुझे बताएं कि मेन क्लॉज कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। 1 2 3 4 5। यस, एब्सोल्युटली राइट। सिंपल कम इज द मेन क्लॉज एंड व्हेन यू लाइक इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। कम मतलब व्हेन यू से सिंपली कम यू गिव इम्पेरेटिव, मतलब आप कमांड देते हैं, आप सिंपली कहते हैं कम, रन, स्लीप, सिट, स्टैंड। तो दिस मीन्स के यू आर टॉकिंग टू समवन, ठीक है, हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर सेइंग कि यू कैन कम or you should come when you like, right? So simple come is the main clause and when you like is the subordinate clause. Okay, when my father arrives he will give the direction। When my father arrives he will give the direction। अब इसमें he will give the direction is the main clause and when my father arrives that is the subordinate clause। Getting the point? Okay, next, when the flowers bloom I will plant more trees। When the flowers bloom, while the flowers bloom I will plant more trees। तो अब इस सेंटेंस के अंदर yes absolutely right, I will plant more trees that is the main clause and while the flowers bloom that is the subordinate clause। Okay, until the sun sets sit by the lake। तो अब इस सेंटेंस के अंदर मेन क्लॉज कौन सी है? yes absolutely right, sit by the lake is the main clause। Sit by the lake is the main clause whereas until the sunset that is the subordinate clause। अच्छा, before the food gets cold sit at the table। तो अब इसमें क्या है? sit at the table is the main clause and before the food gets cold that is the subordinate clause, right? Okay, unless you have the right size do not try the shoes। तो अब इसमें क्या है? do not try the shoes is the main clause and unless you have the right size that is the subordinate clause। Okay, no matter how you look at it we are in good hands। Yes, you are in good hands
we are in good hands. Okay, ये आपको कहना चाहिए. No matter how you look at it, we are in good hands because you are in my hands. Okay, so we are in good hands is the main clause, and no matter how you look at it, that is the subordinate clause. Okay, I know the man who is here. I know the man who is here. अब इसमें I know the man, that is the main clause, and who is here, that is the subordinate clause. Okay, let us rejoice as we move forward. Let us rejoice as we move forward. तो अब इसमें मेन क्लॉज कौन सी है? Yes, let us rejoice is the main clause, and as we move forward, that is the subordinate clause, right? Okay, I think that he will die. I think that he will die. अब इसमें देखें, I think, that is the main clause, और that he will die, that is the subordinate clause. My mother hopes that you will visit us. My mother hopes that you will visit us. अब इसमें my mother hopes is the main clause, and that you will visit us is the subordinate clause, right? Okay, he ate when he was hungry. He ate when he was hungry. तो अब इसमें he ate is the main clause, and when he was hungry is the subordinate clause. अच्छा, as I was going in, my father came out. As I was going in, my father came out. अब इसमें my father came out is the main clause, and as I was going in is the subordinate clause, right? So you have to tell me कि out of 20 आपको आपने कितने sentences ठीक किए. Okay, so that before we move to the next segment of the session, तो आप मुझे जल्दी से बता दें कि आपने कितने sentences out of 20 ठीक किए. Okay, very good, very good. So shall we move to the next portion where we have to highlight the subordinate clauses? Okay, moving to the subordinate clause. तो क्या होती है जनाब subordinate clause? So a subordinate clause is a type of clause that does not convey a complete meaning itself. A subordinate clause depends on the main clause to complete the sense. जैसे for example, I saw a man who was dancing. तो अब इसमें जो who was dancing मतलब जो डांस कर रहा था, मैं सिंपल कहता रहूँ तो आपको बात समझ नहीं आएगी. तो ये वाली जो क्लॉज है कि अपना मीनिंग बताने में इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है. दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ सबॉर्डिनेट क्लॉज और वी कॉल इट अ डिपेंडेंट क्लॉज. जो मेन क्लॉज होती है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. Now again, similar activity, what you have to do is that there are 20 sentences, and out of these 20 sentences, this time you have to highlight the subordinate clause. Now it is going to be very easy for you because आपने अभी जब आप while you were highlighting the main clause, you were actually looking at the subordinate clause as well. So this is going to be a fun activity, a very easy activity, because you have to only highlight the subordinate clause. So shall we start? Okay. I prefer the year when the monsoon failed. I prefer the year when the monsoon failed. तो अब इसमें subordinate clause कौन सी है? Yes, absolutely right. When the monsoon failed, that is the subordinate clause. अच्छा, you will always regret that that when you did this. ठीक है? You will always regret that when you did this. ठीक है? और why भी हम इसको कर सकते हैं, that why you did this. ठीक है? तो so this means कि that why you did this is the subordinate clause. Okay, I will not make the same mistake that you did. तो अब इसमें that you did, I will not make the same mistake is the main clause, and that you did is the subordinate clause, right? Okay, when the sun shines, we will shine together. When the sun shines, we will shine together. इसमें when the sun shines is the subordinate clause, and we will shine together is the main clause. Okay, if it takes the rest of my life, baby, I will I will wait for you. Okay, I will wait for you. Babe, if it takes the rest of my life, baby, I will wait for you. अब इसमें baby, I will wait for you is the main clause, and if it takes the rest of my life, that is the subordinate clause. That is the subordinate clause. Okay, because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. तो अब इसमें क्या है? Because you are mine, that is the subordinate clause, and I walk the line, that is the main clause. Okay, when father entered the kitchen, mother was cooking food. Mother was cooking food. When father entered the kitchen, that is the subordinate clause, and mother was cooking food, that is the main clause. Okay, he says that he met your brother. He says that he met your brother. That he met your brother, that is the subordinate clause, and he says that is the main clause. The man who is speaking now is my brother.
तो अब इसमें who is speaking now, who is speaking now is a subordinate clause, and the man is my brother, the man is my brother is the main clause. Okay, she behaves as if she missed Canada. She behaves as if she missed Canada. So as if she missed Canada is the subordinate clause, right? Okay, it was you whom I saw first. It was you is the main clause, and whom I saw first, that is the subordinate clause. Absolutely right. Okay, next question number 12. He works that he could learn more money. He could earn. Okay, it should not be learn, it should be earn. He works that he could earn more money for his son's marriage. अब इसमें he works, simple, he works is the main clause, and that he could earn more money for his son's marriage, that is the subordinate clause, right? Okay, though I'm poor, I'm honest. Though I'm poor is the subordinate clause, and I'm honest, that is the main clause. Okay, this is the house that Jack built. Now this is the house is the main clause, and that Jack built, that is the subordinate clause. Very good. Okay, no sooner did he see us than he disappeared. Okay, no sooner did he see us, then, that is the subordinate clause, and he disappeared, that is the main clause. Okay, they came after the storm ended. They came after the storm ended. After the storm ended is the subordinate clause, and they came is the main clause. Okay, the hunter was careful not to attack the tiger directly. The hunter was careful not to attack the tiger directly. Not to attack the tiger directly is the subordinate clause, and the hunter was careful, that is the main clause. The police will arrive immediately after you call. The police will arrive, that is the main clause, and immediately after you, the police will arrive immediately is the main clause, and after you call is the subordinate clause. Okay, this is the house where they lived in. Now this is the house is the main clause, and where they lived in, that is the subordinate clause. Moving to the last question. He went where his mother sent him. He went is the main clause, and where his mother sent him, that is the subordinate clause. And today we learned the concept of main and subordinate clause, and we did an exercise as well of both the concepts. Main clause की भी हमने exercise की और subordinate clause की भी की. Now please tell me your numbers, the marks that you got out of this quiz out of 40. आप मुझे comments में बताइएगा, live chat में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने marks आए, and stay connected with English Keys language series. इसी तरीके से we will be doing a lot of activities and exercises of grammar in such a funny way. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं कल के लेक्चर में दोबारा. खुदा हाफिज़.